Hello students. So we are starting with paper 2 of mathematics and we'll be starting with the first lesson today, that is differentiation. Now in differentiation we have learned a lot many things last year. Last year we have seen what is the definition. So this was the definition that we have learned. F dash of a is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. So this was our definition that we have seen last year. Then we have also seen what is the first principle of derivative. So the first principle of derivative is given by this formula, that is f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h, and it is written as dy by dx is equal to f dash of x if you are given y is equal to fx is a function. Then we have also seen the Leibniz notation. So in Leibniz notation, we take a small increment delta x in x and there will be corresponding increment delta y in y. Then if limit x delta x tends to 0, delta y divided by delta x, if it exists, then it is dy by dx. So this was the notation that we have studied last year. Then we have also seen the formulas and we have also applied these formulae in solving the examples. So here are the formulas given to us. So let's just go through them. So here in the first column you are given y is equal to fx function and you are given the derivative of that y. So derivative of a constant is 0. Then we have derivative of x raised to n is equal to n x raised to n minus 1. Derivative 1 upon x is minus 1 upon x square. Then 1 upon x raised to n, the derivative is given by minus of n divided by x raised to n plus 1. Root x derivative is 1 upon 2 root of x. Derivative of sin x is cos x. Derivative of cos x is minus sin x. Derivative of tan x is sec square x. Then derivative of sec x is sec x into tan x. Derivative of cosec x is minus of cosec into cot x. Derivative of cot x is minus cosec square. Derivative of e raised to x is e raised to x. Derivative of a raised to x is a raised to x into log of a. Derivative of log x is 1 upon x, and derivative of log of x to the base a. Here the base is e, whereas here the base is a. So this is derivative of log of x to the base a is equal to 1 upon x into log of a. So these are the formulas that we have applied last year. And along with the formula, we have also seen some rules of derivatives. So in the rules of derivative, we have first learned the addition, subtraction, scalar multiplication. So we know if you are given u and v are differentiable functions of x such that we are given y is equal to u plus or minus v, then dy by dx is equal to du by dx plus or minus dv by dx. So you can say that differentiation is distributive over addition and subtraction. Also it is distributive over scalar multiplication. Then we have learned about the product rule. So y is equal to u into v. Then you can say dy by dx is equal to u into dv by dx plus v into du by dx. So that is u into derivative of v plus v into derivative of u. Next, we have if you are given y is equal to u upon v and v is not equal to 0, then we know that dy by dx is equal to v into derivative of u minus u into derivative of v divided by v square. So these all formulas we have learned last year and we have applied them also. Now this year we'll be starting first with the theorem of composite function. So let's look at what do we know about composite function. Composite function भी हमने last year study किया था. If you are having a function f and you are compositing with g, then you can say f of g is a composite function. So here also we are having a composite function. Now here the theorem says that
if y is equal to f of u is a differentiable function of u and u is equal to g of x is a differentiable function of x, such that the composite function y is equal to f of g of x is differentiable function of x, then you can say dy by dx is equal to dy by du into du by dx. Let's see the proof. How does the proof work? Now what we are going to do over here is, you are given that y is equal to f of u and u is equal to g of x. Both are functions, right? Y is a function of u is a function of x, and both of them are differentiable functions. Then what we are going to do is, we are going to take a small increment in x that is known as delta x. If there is an increment in x, there will be an increment in u because u is a function of x. तो अगर x के अंदर हमने इंक्रीमेंट किया तो y के अंदर भी इंक्रीमेंट, u के अंदर भी इंक्रीमेंट होगा, और अगर u के लिए इंक्रीमेंट हो गया तो हमें पता है y क्या है, फंक्शन ऑफ u है, तो y के अंदर भी इंक्रीमेंट होगा. तो वी आर गोइंग टू कॉल delta x as the increment in x, delta u and delta y will be the corresponding increment in u and y respectively. Now here we are going to consider that these increments are not equal to 0. So we are going to consider that delta x is not equal to 0, we'll consider delta u is not equal to 0, and we'll consider delta y is also not equal to 0. Now what we are going to do is, we want to find out what is dy by dx. तो Leibniz notation अगर हमें चाहिए है तो Leibniz notation is limit delta x tends to 0 delta y divided by delta x. If it exists, then that value is equal to dy by dx. Now we are interested in this part. अब ये पार्ट चाहिए है तो हमें डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स चाहिए. सो विल कंसिडर व्हाट इज डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स. सो वी नो डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स. नाउ दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा वाई, sorry, this is delta y divided by delta x. We can say this value is same as delta y divided by delta u multiply by delta u divided by delta x. हमने क्या किया, डेल्टा यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. Now we want a limit on both sides, so we'll take limit on both the sides. So taking limit as delta x tends to 0 on both sides. So as we take limit on both the side, left hand side हमें मिल जाता है, the left hand side is, this is limit डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर हियर, हमने पढ़ा हुआ है. सो वी कैन से दिस इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा u मल्टीप्लाई बाय दिस इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u डिवाइड बाय डेल्टा x. अब अगर लिबनीज नोटेशन हमें यूज करना है, सो हियर शुड बी डेल्टा एक्स एंड द डिनोमिनेटर शुड बी डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे dx होता है. नाउ इफ यू लुक एट दिस साइड, ये साइड में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हियर वी हैव प्रॉब्लम. यहाँ पे डेल्टा एक्स है, यहाँ पे डेल्टा यू है. वी वांट डेल्टा यू इन प्लेस ऑफ डेल्टा एक्स ओवर हियर. तो हम क्या करते हैं, सिंस वी नो दैट हमने लिया था डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट लिया था एक्स में, तो एक्स अगर इंक्रीज हो गया तो वाई इंक्रीज हुआ था. सो वी कैन से सिंस वी नो दैट एज डेल्टा एक्स गोज टू 0 डेल्टा यू विल आल्सो गो टू 0. यू एक्स अगर बदलेगा तो यू भी बदलेगा. सो दैट इज व्हाई वी कैन इंटरचेंज द लिमिट ओवर हियर. सो दैट वैल्यू वी कैन राइट इट एज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, दिस साइड कैन बी रिटन एज लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा u मल्टीप्लाई बाय, इसको तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, सो विल कीप इट एज इट इज. So that is limit delta x tends to 0 delta u divided by delta x. Okay. Now we are given that, see in the theorem we are given that
y is equal to f of u is differentiable function of u is equal to g of x is also a differentiable function of x. तो ये दोनों अगर differentiable function है तो हम बोल सकते हैं कि dy by du and du by dx both exist. So we can write, since we are given, since y is differentiable function of u, so we can say that the limit delta u tends to 0, delta y divided by delta u exist. And if it is existing, then we can say limit delta u tends to 0, delta y divided by delta u is equal to dy by du. And also we are having that u is a differentiable function of x. So if it is differentiable function of x, we can say limit delta x tends to 0, delta y divided by, delta u divided by delta x exist. And if it is existing, we also say limit delta x tends to 0, delta u divided by delta x is equal to du by dx. Now what we are going to do is, let us call this as equation number 1. We'll call this as equation number 2 and we'll call this as equation number 3. Now if you look at equation number 1 over here, equation 1, this limit is existing. Also this limit is existing. If both the limits are existing, we can say the right hand side limit is existing. So we can say, so therefore limit on RHS of 1 exist. If limit on right hand side is existing, we can also say the limit on LHS of 1 also exist. So अगर लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रहा है तो राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करता है, राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट करता है. सो वी गॉट दैट द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज आल्सो एग्जिस्टिंग. तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, देन वी कैन से देयरफॉर यू गेट लिमिट delta x tends to 0, delta y divided by delta x exist. And if it is existing, we say this is a limit delta x tends to 0, delta y divided by delta x is equal to dy by dx. Now what we are having over here, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का पूरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड साइड का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है. दिस इज अवर इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 के अंदर हम इक्वेशन 2, 3 एंड लेट अस कॉल दिस इक्वेशन एज 4. ये सभी इक्वेशंस अगर डाल देते हैं तो हमें क्या मिलता है? So after that we get, so therefore, so from equation 1, 2 and 3, we get, what do we get? We are going to get, here we get limit, that is you get dy by dx is equal to dy by du multiply by du by dx, and this is called as the composite function derivative rule, and this is also known as a chain rule. We'll be seeing how the rule is applied and why it is called as the chain rule in the examples. So I hope you understood how the theorem works. Now here you can see the theorem is very important. Very few theorems are there, but they are quite important.
So theorem, the proof is also given in the textbook. You can use it from the textbook or else it is already given now. Now look at these notes. The first note says that if you are given the derivative of the composite function can be expressed as y is equal to f of u is a differentiable of function of u and u is equal to g of x is a differentiable function of x, such that the composite function y is equal to f of g of x is defined as, see अगर y हमें इस तरह से दिया हुआ है, y खुद एक composite function है, then you can say dy by dx is equal to, this is f dash of x. See, this is dy by dx is equal to f dash of g of x multiply by g of x. तो एक्चुअली है दोनों भी सेम, वो जो हमने अप्लाई किया था दैट इज dy by dx is equal to, this is dy by du into du by dx. तो this is the same thing, सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, ये जो हमारा u दिया था तो u को हमने इस तरह से लिखा है g of x करके, and that is how it is working over here. Next is so you'll have to remember this, we'll be using this in the examples. Next is if you are given y is equal to f of u is a differentiable function of v. If y is equal to f of v is a differentiable function of v and v is equal to g of u is a differentiable function of u, and you are given u is equal to h of x is a differentiable function of x, then dy by dx is equal to dy by dv multiply by dv by du into this is du by dx. अब ये है क्या, लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड दीज टू, या जो थियरम हमने लर्न किया है वो और ये हम देखते हैं क्या है. सपोज यू आर गिवन द फंक्शन, suppose you are given the function, say y is equal to sine of 2x, राइट. अब साइन का तो हमारे पास फॉर्मूला है डेरिवेटिव्स के लिए, राइट, हमने देखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स. लेकिन अब क्या हो गया है, एक्स के जगह पे क्या हो गया है, 2x हो गया है. दिस इज चेंज नाउ. नाउ द x हैज रिप्लेस्ड बाय इट्स फंक्शन. तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, वी फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ दिस y विद रिस्पेक्ट टू x. तो हम ये बाहर वाला जो फंक्शन है दैट इज साइन, ये साइन का पहले डेरिवेटिव निकालते हैं दैट इज एफ डैश ओवर हियर, राइट. सो साइन का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस. अब जब हम ये यूज कर रहे हैं तो g ऑफ x को तो यहाँ पे चेंज नहीं किया है, तो g ऑफ x हमारा वैसे ही रहेगा. सो दिस इज 2x. अब इसके बाद क्या हो जाएगा, हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x. अब ये डेरिवेटिव ऑफ 2x अगर हम देखें तो हमें मिल जाता है दिस इज कॉस ऑफ 2x और डेरिवेटिव ऑफ 2x हो जाता है 2. देन यू कैन राइट द वैल्यू एज 2 into cos of 2x. This is how it works. See, पहले बाहर वाले फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकाला, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला. So now let's change this a little. This is y is equal to sine of, let me take the function as say cos of 3x, या फिर इसको स्क्वायर कर देते हैं 3x स्क्वायर. नाउ लेट्स लुक एट द फंक्शंस. अब अगर हम ये फंक्शंस देखें, हमारा x कहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट. दिस इज आवर x फंक्शन. अब ये x का हमने क्या निकाला हुआ है, ये फंक्शन का हमने निकाला हुआ है कॉस वैल्यू, और ये कॉस वैल्यू का हमने क्या निकाला है, साइन वैल्यू. सो सबसे अंदर वाला फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है और यहाँ पे फंक्शन है. यू रिमेम्बर व्हेन यू ईट अ चॉकलेट, सपोज आपको सिल्क चॉकलेट खाना होगा तो आप क्या करोगे, यू गो टू अ शॉप बाय अ सिल्क चॉकलेट, राइट. तो आप जब उसको खोलोगे तो सबसे पहले बाहर वाला एक रैपर रहता है,
राइट, द पर्पल कलर रैपर। वो पर्पल कलर रैपर खोलेंगे तो उसके अंदर एक कवरिंग रहता है, दैट इज अ पेपर कवरिंग। फिर वो पेपर कवरिंग आप निकालते हो तो भी आप डायरेक्ट चॉकलेट नहीं खा सकते, उसके अंदर और एक कवरिंग रहता है, देर इज अ सिल्वर फॉइल। तो वो सिल्वर फॉइल आप ओपन करोगे और उसके बाद आप चॉकलेट खाओगे, राइट। सो दिस इज इन द सिमिलर वे। तो बाहर का आउटर कवरिंग पहले निकालेंगे एंड देन वी गो टू द इनर कोर। सो वी आर यूजिंग इट ओवर हियर। लेट्स सी हाउ इट विल बी डन नाउ। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dy बाय dx। सो दैट वैल्यू, सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन है, साइन। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। पहले हमने बाहर का कवरिंग ओपन किया, अंदर वाला वैसे ही रहेगा, दैट इज कॉस ऑफ 3x स्क्वायर। इसको हमने कुछ चेंज नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अंदर वाला कवरिंग ओपन कर रहे हैं, दैट इज दिस। सो दिस इज कॉस ऑफ 3x स्क्वायर। अब ये अंदर वाला है। अब वापस अगर इसको देखें तो इसको भी एक कवरिंग है, ये कॉस इज द कवरिंग देयर, दिस इज द कॉस दैट इज द कवरिंग। नाउ विल ओपन दैट कवरिंग तो ये हो जाता है, दिस वैल्यू इज कॉस ऑफ, दिस इज कॉस ऑफ 3x स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाई। अब ये कॉस का डेरिवेटिव अगर देखेंगे, द डेरिवेटिव इज साइन। अब ये अंदर वाला टर्म वैसे ही रहेगा जो है 3x स्क्वायर। अब बाहर के दोनों कवरिंग ओपन हो गए, हमें चाहिए है एक और अंदर कवरिंग बचा है जो है 3x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये वाले टर्म का वापस से डेरिवेटिव निकालेंगे। सो दैट वैल्यू इज, माइनस साइन इज ओवर हियर, सो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, दिस इज कॉस ऑफ 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया साइन ऑफ 3x स्क्वायर। अब ये 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स रेज टू एन के फॉर्मूला से, तो ये हो जाएगा 6x। अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करके ठीक से लिखेंगे, सो ये हो जाएगा -6x इंटू दिस इज कॉस ऑफ 3x स्क्वायर into this is sine of 3x square. So now you see, बाहर वाला कवरिंग पहले ओपन किया तो उसके लिए ये वैल्यू मिला, फिर उसके बाद cos वाला ओपन किया तो ये वाला वैल्यू मिला, उसके बाद ये 3x स्क्वायर को ओपन किया तो ये हमें लास्ट वैल्यू मिला। सी हाउ इट इज ओपनिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज द चेन रूल। ये चेन के तरह जा रहा है बाहर से अंदर की तरफ, सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द चेन रूल। नाउ हियर वी हैव सीन अ फंक्शन, हियर हमने 2 बार यूज किया चेन रूल। उसी तरह से आप इसको n नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई कर सकते हो, दैट इज योर रूल नंबर 3 ओवर हियर। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज दिस। नाउ we'll start with examples. Let's take examples. We are starting with exercise number 1.1. Now few sums I have marked. I'll be doing the sums which I have marked, and the remaining sums you are going to try. Let's see whether you are able to do it or no. Okay. So starting with the first problem there, here. Now here it is given as differentiate with respect to x. इसके आगे पीछे कुछ नहीं दिया है, तो we will be calling all the functions as y is equal to the given value. So here let us consider the first term, second sum. Here we are taking y is equal to, this is 2 into x raised to 3 by 4 minus this is 3x raised to 4 by 3 minus 5 whole raised to 5 by 2. अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू सी व्हाट इज द आउटर कवरिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें, द आउटर कवरिंग इज ओवर हियर, राइट। तो आउटर कवरिंग ओपन करने के लिए विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला जैसे प्रीवियसली अप्लाई किया था। बट बिफोर आई गो टू द गो टू द एग्जाम्पल, लेट मी शो यू फ्यू मोर फॉर्मूलाज। Now these are few formulas that we are going to use. अब ये चेन रूल वाले फॉर्मूले हैं। So the first formula given over here is derivative of f of x raised to n. So f of x raised to n is given by the formula
this is n into fx raised to n minus 1 into f dash of x. You remember the formula derivative of x raised to n. So derivative of x raised to n हमने लिखा था n x raised to n minus 1. तो ये फॉर्मूला वैसा ही है, सिर्फ अब क्या हो गया है, हमने ये x को रिप्लेस किससे कर दिया है, वी हैव रिप्लेस दैट x बाय fx. fx इज अ फंक्शन ऑफ x, fx रेज टू n. तो क्या हो जाएगा, ये n वैसे ही रहेगा, ये x बदल के हो जाएगा f ऑफ x रेज टू दिस बिकम्स n माइनस 1. अब ये बाहर वाला, दिस इज अवर आउटर कवरिंग. अब इनर कवरिंग का डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो ये हो जाता है f डैश ऑफ x. सो दैट इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला, n एफ एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ x. उसी तरह से रूट एक्स का फॉर्मूला हमारे पास था, रूट एक्स वॉज 1/2 रूट ऑफ एक्स. तो उसको हमने रिप्लेस करके एफ एक्स को रिप्लेस करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे एफ एक्स से, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू रूट ऑफ एफ एक्स. डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एफ एक्स रेज टू एन माइनस एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस 1. सो द फॉर्मूला इज सिमिलर, सिर्फ एक्स को हमने रिप्लेस किया है एफ एक्स से, और जैसे ही एफ एक्स से रिप्लेस करेंगे एफ एक्स का डेरिवेटिव भी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा. सो साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स एंड सो ऑन. सो ऑल द फॉर्मूलाज आर गिवन ओवर हियर. It is also there in your textbook, so you can just copy them down from the textbook and we'll see how to apply them. Here we have tan of fx. Tan of fx is sec square fx into f dash of x. Sec fx is equal to sec of fx into tan of fx into f dash of x. Formula वही है, x के जगह पे सिर्फ हो गया है fx and multiplied with the derivative. So here also cot of fx derivative is minus cosec square fx multiplied by f dash of x. Cosec fx का derivative is minus of cosec of fx into cot of fx multiplied by f dash of x. Next, derivative of a raised to fx. Derivative of a raised to fx is a raised to fx into log of a into f dash of x. E raised to fx का derivative e raised to fx into f dash of x. Log of fx का derivative f dash of x divided by fx. Log of fx to the base a का derivative, बेस चेंज हो गया, यहाँ पे e था, यहाँ पे चेंज होके a हो गया, तो ये है f dash of x divided by fx into log of a. See, formula are similar, the only thing is the function x is replaced by its function and the multiplication of the derivative of the function. So this is how the formula works. अब इसको यूज करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स में. So we were over here looking at our example. ये था हमारा पहला एग्जाम्पल जो हम सॉल्व कर रहे थे. सो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स रेज टू एन. ऐसी है ना, ये पूरा जो ब्रैकेट है वो हमारा एफ एक्स है. सो फॉर्मूला के हिसाब से ये होना चाहिए, द फॉर्मूला शुड बी एन इंटू दिस इज एफ ऑफ एक्स रेज टू n minus 1 into f dash of x. So let's apply it. So we are differentiating the function with respect to x. As we differentiate हमें मिलता है dy by dx is equal to this value. ये हो जाता है, ये पूरा fx है हमारा. So this value is n into fx raised to n minus 1. So ये हो जाएगा 5/2 minus 1 into this is derivative of fx. So fx हमारा ये पूरा ब्रैकेट है, तो we'll write down the fx over here. So that value is 2x raised to 3/4 minus 3x raised to 4/3 minus 5. Let's calculate the term. So that value is equal to, ये term को तो वैसे ही रखना है, that is 5/2. This value is 2x raised to 3/4 minus 3x raised to 4/3 minus 5. 5/2 minus 1 करेंगे तो हो जाता है 3/2 multiply by. अब इसका डेरिवेटिव हमें चाहिए. So derivative we know, so we'll apply. ये हो जाएगा 2 multiply by this is 3/4
into x raised to 3 by 4 minus 1. So shall I directly write 3 by 4 minus 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा minus 1 by 4. Here this is minus 3 multiplied by 4 upon 3 into this is x raised to 4 by 3 minus 1 करेंगे तो होगा 1 by 3. Derivative of the constant is 0. So that value is equal to this is 5 upon 2 into 2x raised to 3 by 4 minus 3x raised to 4 by 3 minus 5 whole raised to 3 by 2 multiply by 4 ones are cancelled, 2 is cancelled, so this is 3 by 2 x raised to minus 1 by 4 minus 3 again cancel, so this is 4 x raised to 1 by 3 and that is the answer. I hope you understood. हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, we are just applying the formulas. Let's take one more example from this side. We are looking at the 6th sub question. Question आपको दिया हुआ है. The question is there is 6th sub question. You are given y is equal to this is a root of 3x minus 5 minus 1 upon root of 3x minus 5 whole raised to 5. Let's see how this has to be done. अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन एफ एक्स रेज टू एन का एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट बिफोर दैट 1/रूट के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. वी कैन राइट द टर्म एज y इज इक्वल टू दिस इज रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस ये वैल्यू हो जाएगा 3x माइनस 5 रेज टू माइनस हाफ एंड होल रेज टू 5. रूट को हमने ऊपर ले लिया एंड वी हैव मेड इट इन द पावर फॉर्म, तो ये हो जाता है. अब ये सिंपल हो गया. नाउ विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x विल गिव अस dy by dx इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 3x माइनस 5 minus this is 3x minus 5 raised to minus 1 upon 2 power. This is n fx raised to n minus 1. So 5 minus 1 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ fx. सो fx हमारे पास है रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस ये हो जाएगा 3x माइनस 5 रेज टू माइनस 1 अपॉन 2. अब हम ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है हमारा इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर. सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय ये टर्म को कुछ नहीं करेंगे वैसे ही रखेंगे रूट ऑफ 3x माइनस 5 एज इट इज माइनस दिस इज 3x माइनस 5 रेज टू माइनस 1 अपॉन 2 एंड होल रेज टू 4 इनटू. अब डेरिवेटिव निकालते हैं रूट एफ एक्स. रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ एफ एक्स दैट इज 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. यहाँ पे एफ एक्स हमारा है द एफ एक्स इज 3x माइनस 5. ये पूरा जो टर्म है हमारा ये पूरा जो है वो हमारा एफ एक्स है माइनस. अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एफ एक्स दैट इज 3x माइनस 5 रेज टू माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 बाई 2 इंटू दिस इज डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5. सी अगेन चेन रूल यहाँ पे भी अप्लाई किया है. ये हमारा पूरा फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हमने यहाँ निकाला है. ये हमारा फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव यहाँ निकला हुआ है. नाउ विल फाइंड द डेरिवेटिव. व्हाट हैपेंस देयर नाउ. सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 5 इनटू ये टर्म वैसे ही रहेगा जो है रूट ऑफ 3x माइनस 5
minus this is 3x minus 5 raised to minus 1/2 raised to 4 multiply by, अब ये टर्म का डेरिवेटिव निकालना है और ये टर्म का डेरिवेटिव निकालना है, सो दैट इज 1/, बाकी के टर्म वैसे ही 1/3x माइनस 5 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 3x हो जाएगा 3 माइनस 5 कांस्टेंट, डेरिवेटिव इज 0, माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस, दिस इज 1/2, ये टर्म वैसे ही रहेगा 3x माइनस 5 रेज टू माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5 वापस से हो जाएगा 3। अब इसको हम ठीक से लिखते हैं, सो दैट वैल्यू इज दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म एज इट इज, दैट इज रूट ऑफ 3x माइनस 5 minus this is 3x minus 5 raised to minus 1/2 whole raised to 4 multiply by, इसको हम लिखेंगे this value is 3 divided by 2 into root of 3x minus 5 plus ये हो जाएगा 3/2 into 3x minus 5 raised to 3/2, पावर नेगेटिव था तो हमने इसको नीचे लेके आए हैं, दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रोसेस, एक ही जो चेन रूल है हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टॉप हियर फॉर द डे, बाकी के ग्रुप के क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।